ठीक है. Okay, sir. There are obviously some nuances here and there, no? Because let us suppose you have something like this. There is someone saying change in enthalpy of formation, if they are saying, right? Yeah, combustion, if they are saying. So if you are not mentioning for formation or combustion, then the complete picture is not provided, है ना? So there are nuances in thermodynamics. That's it. Okay, fine. See, Abdul Hamid, am I audible? Yes, sir. Okay. Abdul Hamid, what chapter is going on in your school right now? Sir, chemical bonding. They are doing chemical bonding. What about thermodynamics? They have not done. No, sir. Okay, so why Yes, did sir, you? second. Yeah. But you wanted thermodynamics classes, right? No, sir. Oh, Actually, for me, it's difficult on weekdays also. It's difficult for you attending two different classes, two different batches. Yes, sir. It would be, but I think in your syllabus, thermodynamics is there, right? Yes, sir. It's there. It's there. Achha. Now, see, were you present in the last lecture of your batch? Where we ended the complete chapter, chemical bonding? Yes, sir. You were there, ना? ठीक है. Yeah. So अब आपके पास choice है. You can attend on Saturday. अब देखिए, अब if you want to shift the batch to Saturday, Sunday, तो आप इसी batch के part बन जाइए. उस batch को छोड़ सकते हैं आप right now. Because there I have ended chemical bonding, I'm going to start thermodynamics there right now. So obviously you don't want to do thermodynamics twice, right? एक बार तो आपने कर लिया Yes. thermodynamics. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप बोले तो फिर हम टीम को कह देंगे कि आपको आई थिंक वो क्लासेस के मंडे हो नहीं ट्यूसडे थर्सडे होती है ना ट्यूसडे थर्सडे वाले लिंक्स Yes, sir. आपको Yes, sir. ना प्रोवाइड करें एंड इफ यू Okay. वांट टू ज्वाइन एनी डे यू आर फ्री टू ज्वाइन क्या ख्याल है आप क्या चाहते हैं कि आपको लिंक मिलता रहे और जब आपकी मर्जी होगी जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है तो आपने उस क्लास को ज्वाइन कर लिया Okay, sir. तो डिफाइन आप अपने हिसाब से ज्वाइन कीजिएगा ठीक है ना आई विल जस्ट Okay. लेट देम नो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच प्राइमरली और जो सेकंड C2 बैच है 11 C2 ट्यूसडे थर्सडे वाला वहां पे आप मतलब टेम्पररीली इन द सेंस यू विल अटेंड व्हेनेवर यू हैव टू यू आर नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दैट बैच यू आर नाउ अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ C1 ठीक है अब्दुल हमीद Yes, sir. ओके सो बाय द वे व्हेन इज योर एग्जाम द हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट व्हाटएवर इट इज अब्दुल हमीद hello Abdul Hamid am I audible your mic is off by the way I think he's not here Second. 2nd of October Yes, sir. chemical sorry thermodynamics is there in the syllabus Abdul Hamid yes Abdul Hamid No, is sir. No, sir. thermodynamics is not there No, sir. नहीं तो लेकिन फिर आपने ये अच्छा ये मेरा सजेशन तो नहीं था कि आप दो क्लास अटेंड करें आई थिंक इट वाज कमिंग इन योर सिलेबस ना थर्मोडायनामिक्स पहले तभी तो आपने यहाँ पे बैचेस में क्लासेस स्टार्ट की नहीं Yes, sir. it was previously it was there na thermodynamics in your syllabus right No, sir. It was never there till now. Didn't start in that chapter. but अच्छा then why did we start Actually, my Conjugate mom interest. told that like it's difficult in the weekdays after the vacations. It's difficult in the weekdays. So the LearnView team told that if I join the weekend batch, I'm अच्छा lacking अच्छा अच्छा in the portions. अच्छा fine अच्छा अभी याद So आ that. thank you for reminding me so now you are part अच्छा ठीक है that reason is served by now है ना वो ठीक है Yes, yeah now sir. you are part of this batch only ठीक है तो भाई हम सोच रहे थे कि आपको इस बैच में फिर क्यों आना था एकदम ध्यान ही नहीं आ रहा था ओके फाइन
We are going to start organic chemistry now. And by looking at the attendance today, I will see whether I have to do like 1.5 hour or 1 hour class. Because if I take a long class this time and the students are, you can see how many students are here. 1, 2, 3, 4. There are few students who are missed, not here. Mariam, assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. Where were you yesterday? Sir, actually, I had guests in my house yesterday. And अपने गेस्ट्स को बताया नहीं है कि आप 11th स्टैंडर्ड में हैं? छुपा के रखा है क्या आपने? किस मरियम? No, sir. तो फिर हाँ जी, you had guests, so what? तो पढ़ाई तो होगी ही, पढ़ाई नहीं होगी गेस्ट आएंगे तो. हाँ जी मरियम. Yes, sir. यस सर सर बोल रही हैं आप तो, मतलब आप कह रही हैं कि पढ़ाई नहीं होगी ना गेस्ट आएंगे तो. But it was just one day. I won't take a leave. You will watch the lecture ना? चलिए ठीक है, आज अटेंडेंस ठीक हो गई है. Siddika is also here, so I think we can have the 1.5 hour lecture. Let us see. Abdul Hamid, Martin, Mariam, Siddika, Harsha, Yafin. So most of the students are here. Guys, those who were not present in the last lecture. Siddika, why were you not present in the last lecture? Sir, I was out of the city. Out of the city. कहाँ गए थे आप घूमने? Sir, we had gone to family friends. Where? We were invited by some family friends. अच्छा, you were invited में दावत में गए थे आप. अच्छा, ठीक है जी. Okay, so we completed the chapter that is thermodynamics, and yesterday I asked, so most of the students, they said that organic chemistry I should start. So are all of you okay with organic chemistry? Just give me a raise of hand. Yes, organic chemistry. So there are 2 chapters in between that we are not doing. The one chapter is equilibrium that we are not doing right now. Then there is redox reaction that we are not doing right now. है ना? तो ये दोनों chapters को skip करके we are going to do organic chemistry. So the chapter's name is quite long. Organic chemistry. Yeah, you can lower your hand, Abdul Hamid. Organic chemistry, some basic principles and techniques. But we can remember it like this. It is just organic chemistry. Okay. So guys, can you quickly please turn your cameras on and I will start the lecture. Let me just start this focus mode. Yeah, focus mode is on. You can turn your videos on. What happened, Abdul Hamid? Your video is not working. So now is it okay? Yeah. Now your audio is also working. Very nice. Yes, sir. I'm on my sister's laptop actually. अच्छा, रख लीजिए आप. समझिए नहीं, अच्छा हाथ लग गया है. ठीक है, रख लीजिए इसको. बढ़िया, आवाज बिल्कुल सही आ रही है. यूनिवर्सिटी नहीं था तो इसलिए मिल गया. अच्छा. Okay, fine, Mariam, not a problem. So, acha, can I also get a raise of hand? How many of you are doing organic chemistry or done with organic chemistry in your school? Sir, we are doing it right now in my school. Mariam is Started also a few days ago. Okay, fine. So Siddika, Harsha, and Mariam, all of these guys. ठीक है, चलो.
So before doing anything, ठीक है, I will not go into the history of organic chemistry कि कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है, ठीक है. I will directly go where the questions come from. और ये बहुत ही आपको अजीब लगेगी, लेकिन जो कुछ पढ़ाया नहीं है अभी हमने, बट हम लोग एक सवाल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन केमिकल बॉन्डिंग. यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, see here, and can you please write this question? How many sigma and pi bonds are present in each of the following molecules? स्टार्ट कर दीजिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खतरनाक चैप्टर नहीं, चैप्टर का नाम लिखा, उसके बाद सबसे पहले नो थ्योरी डायरेक्ट सवाल कर पाएंगे ना. आई होप दिस इज नॉट न्यू गाइस फॉर यू. अब्दुल हमीद, सिद्दीका, हर्षा एंड मरियम. हाँ जी, हो जाएगा. हाँ, अरे बोल Yes. तो यस Yes, अब्दुल, हो जाएगा ना अब्दुल हमीद, हो जाएगा. Yes, sir. सिग्मा पाई ये सारी चीजें तो पुरानी है. मार्टिन, Yes, sir. हाँ हो, I mean you will be able to do this question, right? At least try it. Sigma pi bonds, you must remember if from chemical bonding. If you don't remember, then you please flip some pages. You will see in chemical bonding sigma bonds and pi bonds and all. वहां पे हमने कुछ सवाल भी कराए हुए हैं. अगर आपका नोट्स कंप्लीट है तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस. Once you're done with the questions, you will answer these. You will answer in the Zoom chat. ठीक है, you will answer in the Zoom chat. I've got no answer from anyone. Sigma and pi.
So done with the A1, please send the answer. Not we will see. Correct, Martin. Very good. है अब्दुल हमीद, आपने ए क्या किया है? आंसर कीजिए. What is the answer for the A1? Harmony, sigma, and harmony pi, na? What about others? Harsha, Mariam, Siddiqa. Siddiqa, very good. Siddiqa, Abdul Hamid, very good. Try for the next one. The B1. Okay, Abdul Hamid is done with the B1 also. Yeah, correct. Yeah, Harsha, I think that is for the A1. Siddiqa, B is correct. Very good. बहुत बढ़िया guys. Really nice. Yes, Martin, correct. Very good. मरियम, आपका आंसर नहीं आया अभी तक. हाँ मरियम, मरियम ने क्या? हाँ, ये किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए? मरियम, Sir, it's A. कैन यू शो मी योर वर्क ऑन व्हाट्सएप? कैसे आपने काउंट किया जरा? अगर आपने सिर्फ अच्छा ठीक है, मरियम वाज अ बिट रिलक्टेंट ऑन सेंडिंग द आंसर ऑन व्हाट्सएप, सो आई थिंक आपने सिर्फ देख के आंसर बताया, राइट मरियम? ऐसे ऊपर ऊपर से काउंट करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, sir. वैसे काम नहीं करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यू ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है? हर एक बॉन्ड को खोल खोल के देखिए, तब जाके आपका आंसर सही आएगा. Correct, Harsha. Very good. That is for the second one, I guess. चलिए, जिन लोगों ने ये सवाल कर लिया है उनके लिए अगला सवाल है. What type of hybridization of each of the carbon जो the following compounds? ठीक है. So can anyone tell me one of the question? I will show you guys how to do this one. कोई एक बता दीजिए आप कम से कम इसमें से A, B, C, D, E में. I will do that one for you. And Marie, you have to send me the answer for A once again. Guys, अच्छा अगर if you are able to do the hybridization question, then please attempt it, no problem. But अगर आपको थोड़ा confusion है, then you will let me know which one I should answer. A, B, C, D, E में से I will explain one of any one. Please let me on the chat which one I should explain. If you don't need explanation, that's also fine. You can attempt these. What are you looking at, Martin? A book, sir. What book?
notebook. Mariam, कहाँ थे आप? Here only ना Mariam? Yes, sir. Can I send you in WhatsApp? हाँ, share me on WhatsApp ना, no problem. Mariam, ऐसे किया आपने? Okay, but चलिए ठीक है, इसी को हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं. You have to draw the complete thing है, वही हम कह रहे थे आपसे बार बार. You have to draw the complete thing. If you look at the structure, this carbon atom, it is having one hydrogen, and it is triply bonded to another carbon atom. Then what is the bond between these two carbon atoms? Tell me, Mariam. Mariam, we have how many carbon atoms? 1, 2, 3, 4, and 5, right? There is one bond, single bond, right? Yes. And then we have CH, double bond CH, right? And CH, and then we have single bond CH3. Got it? ठीक है? हाँ है ना, कुछ तो बोलो भाई. Yes, Mariam. अच्छा, if I talk about the sigma bond of CH, then we will be having how many hydrogens do we have? We have one hydrogen, you have two hydrogen, you have three hydrogen, and then you have three hydrogen, six hydrogen. So this will be 6. Correct? I hope you don't have any confusion here. Right. Okay. Now, how many carbons we have? We have between these two carbons, 1 and 2 carbon, there will be one sigma bond. Between 2 and 3 carbon, there will be one sigma. Between 3 and 4, there will be one sigma. Between 4 and 5, there will be one sigma. So 1, 2, 3, and 4 sigma bonds are there. This CC. Can you see that? Yes, sir. And then pi you have pi तो I think आपका सही है. Pi you have pi that is C double bond C, वो 2 है आपके पास, और pi जो ट्रिपल बॉन्ड में होगा C ट्रिपल बॉन्ड C. नहीं, pi तो 2 ही है यहाँ पे.
सॉरी C डबल बॉन्ड दिस इज 1 और ट्रिपल बॉन्ड में C में आपके पास 2 हो जाएगा, तो टोटल pi बॉन्ड इज इक्वल टू 3, टोटल सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 10 ना, गॉट इट? Yes, sir. Guys, please check for the hybridization. Sir, I sent 3 answers. I can't get the other 2. The answer. अच्छा ठीक है. SP3, that's fine. D, you have given it as SP2, that is fine. B, you have given it as SP. अच्छा ठीक है चलिए. First of all, Satika, your answers are right, whatever you have answered. But they are asking the hybridization of each carbon atom. So if you have 2 carbon atoms, you have to tell that what is the hybridization of those 2 carbon atoms also. Got it? Okay. Now please see. For the first one, please all of you guys please see here, carbon, and it is having 3 hydrogens, right? So it is having 3 hydrogens and it is having 1 chlorine. So it is having 4 bonds. That means steric number will be equal to 4. And that is why the hybridization will be equal to what? sp3. I hope you remember this. If you look at this B1, so B will be having a structure like this, carbon double bond O, because oxygen is a bivalent compound that is having a valency of 2. That is why there is a double bond with oxygen. And the rest, it is having CH3 here, and there is 1 CH3 here. So when I talk about this CH3 molecule, this CH3 fragment, it is sp3, because you can see 4 bonds, right? 3 with hydrogen, 1 bond with carbon. So this will also be sp3. Here you can also see that we are having 4 different bonds, right? But here, if I see, here we have 1 fragment, another fragment, and this is the oxygen atom. So only 3 surrounding atoms are there. That is why it will be steric number 3, and it will be sp2. Okay. If you remember something regarding hybridization also, no? Agar aapke paas, if you have all single bond, then it will be sp3. If there is 1 double bond, it will be sp2. Kuch yaad aaya? If it is 1 triple bond, it will be sp. If there is 2 double bonds, then also it is going to be sp. Guys, you guys remember this? Yes or no? Asha, Maria, Martin, and Abdul Hamid, this part. Yes, sir. है ना? उसी हिसाब देखिए जरा. Now you have to remember a few things. For example, CH3 is present. So carbon is already taken care of the 3 bonds that it has to make. 1 bond is with another carbon atom. And how many bonds will be there for nitrogen? What is the valency of nitrogen? Nitrogen is trivalent, right? It makes a triple bonds. Okay, so CN will be like this. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा. In this case, you can easily answer. ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 will be sp3. This carbon atom will be. It is having what? Only 2 sigma bonds, right? This is 1 sigma और 1 sigma आपके पास वहाँ पे होगा. So it was sp hybridized. Now, if you look at CONH2, so carbon double bond with oxygen, single bond with hydrogen. And now, if you look at nitrogen, nitrogen is making 2 bonds already with hydrogen. That is why nitrogen has to make 3 bonds. Nitrogen has to make how many bonds? 3 bonds. It is making 2 bonds with hydrogen, so 1 bond will be with carbon atoms. Now carbon has a double bond, that is why it will be sp2. If you look at the E structure, in this you have CH3, then we have CH, double bond CH, then you have single bond C, this is doubly bonded to nitrogen atom. So I hope you can see here that this is having 4 bonds, 4 sigma bond, that is why it will be sp3. This will be sp2, sp2 because of double bond. This is having a triple bond, that is why it will be sp. ये आपको ध्यान रखना है. Let me know once you're done writing. You can raise your hand once you're done writing.
Hamid is done. Waiting for Siddiqa and Martin. Please write it down quickly, Martin. Just waiting for Martin now. Martin, please write this quickly. Yeah, done, sir. And the next thing, this is all old things, right? From chemical bonding itself. Now, the new things that we are going to learn in this class is the representation of organic molecules. Okay, so please write the heading. The representation of organic molecules. Representation of organic molecules. Now, there are three different ways in which we can show a particular structure. So representation can be in three different ways. It can be either the complete representation, structural formula that we see, structural formula. Okay, so I'm going to give you a very small example, but we are going to go into detail. So what is structural formula? So here, structural formula, for example, if you are having molecular formula will be something like C3, and there will be how many H? C3H8, right? This is the molecular formula. It can be written like this: carbon, which is having another carbon, which is bonded to another carbon, which is having hydrogen, 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 another hydrogen, another hydrogen, and three different hydrogens here also. So here you have to show all the bonds and all the atoms. Can you see that? Yes or no? Please tell me. So what we are representing C3H8, and this is the space and the time that is taken by the structural formula, where you have to represent all the atoms and all the bond. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Next is when you have condensed form, condensed structure. Condensed structure. Now, in condensed structure, the same thing that is C3H8, it becomes one of two ways. You can write it CH3 bonded to CH2 bonded to CH3. This is one way. Sometimes you can also write it CH3 CH2 CH3. This is also valid. So I hope now you can see that there is a lot of space as well as time which has been, which was not wasted rather, right? Which was preserved because of what? Condensing the structure. Can all of you see that? और जो तीसरा है आपके पास ना, that is the extreme case in which we can saving a lot of time. That extreme case, it is known as the bond line structure. Now, bond line structure may take you a while to understand. Like maybe the first week you will be having some difficulty, but I would suggest that always go for bond line structure. Okay? Because bond line structure, it saves a lot of time in the long run. Bond line structure. When I have to represent bond line structure, in that case, I am representing the same thing, C3H8, but I will be representing it like this. That's it. This is the bond line structure. Can you see how much time was saved? Yes or no? Please tell me.
ठीक है, so this is the bond length structure of what? This is the bond length structure of C3H8, that is propane. एक थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया यहाँ पे थोड़ा ले लें. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड once you're done. I'll explain what is the basic difference between all of these structures. What is the basic difference? Raise your hand once you're done writing. Waiting for Abdul Hamid, Siddiqa, and Martin. Just waiting for Siddiqa. No, Siddiqa, you're done. अच्छा ठीक है, चलिए. You guys can lower your hand and can you please turn your mic on? ठीक है. See, very basic differences हम बता रहे हैं आप लोग को, इसी को ध्यान में रखना. You can make all these structures. ठीक है. In the case of structural formula, we need to show all atoms and all bonds. बात समझ में आ गई है ना? Can all of you see that? Yes or no? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई. Yes, sir. है ना? अब बताओ यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या हो चुका है, बताओ जरा. कंडेंस स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे आप? यह सीन ना, आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देख लिया, आपने क्या चेंज हुआ कंडेंस स्ट्रक्चर में, बताइए जरा. What are you not showing in the condensed structure? Tell me, guys. Hydrogen bonds. Mainly that, but in general, what we are going to say, when you are having condensed structure, तो देखिए ये भी स्ट्रक्चर है ना, ये भी condensed structure, so we are going to define it in this particular way, that show only atoms and not bonds. सही है? ठीक है. Now what about the bond line structure? What are we showing here? कुछ नहीं. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नथिंग. सी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ना, हाँ, वी आर शोइंग द बॉन्ड्स. ठीक है, ठीक है, बॉन्ड्स एंड ईच terminal and vertex represents carbon atom with appropriate number of hydrogen. ठीक है, क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्मिनल का मतलब समझ में आता है ना, एंड. टर्मिनल मींस एंड, ऑल ऑफ यू नो दैट, है ना? टर्मिनल बताइए कहाँ पे यूज होता है जनरली टर्मिनल? कहीं यहाँ पे सुनाओ. अरे बहुत सुना होगा आप लोगों ने तो. गर्मी छुट्टी में टर्मिनल करते होंगे आप लोग. नहीं, इंडिया आते होंगे तो टर्मिनल होता होगा. टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 नहीं सुना? कहाँ सुना है? अरे बोलो. हाँ, एयरपोर्ट से सुना है ना. टर्मिनल मतलब क्या हो गया? वहां पे आके खत्म ना. या तो वहां से स्टार्ट होगा जर्नी, मान लो क्या होगा, या तो वहां से जर्नी स्टार्ट होगी, या तो वहां पे जर्नी क्या होगी, एंड हो जाएगी. बात सही है. टर्मिनल डिजीज मतलब उसके बाद
टर्मिनल डिजीज के बाद क्या? विदाउट टिकट, है ना? टर्मिनल डिजीज के बाद विदाउट टिकट हो जाते हैं लोग। तो वही टर्मिनल मतलब या कहां से स्टार्ट हो रहा है या फिर कहीं से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ध्यान दीजिए जरा। तो दिस इज वन कार्बन एटम, वर्टेक्स आ गया आपके पास, दिस इज अनदर। अरे लिखने में तो इतना मशगूल है सारे के सारे बच्चे, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे इधर। 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हियर गाइस, हियर वी आर हैविंग 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। द फर्स्ट कार्बन विजिबल बताना, विजिबल जो दिख रहा है आपको, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? वेरी गुड मरियम, हर्षा, सिद्दीका, अब्दुल हमीद एंड मार्टिन। द फर्स्ट कार्बन, हाउ मेनी बॉन्ड कैन यू सी इट इज मेकिंग? कितने बॉन्ड? 3. हाउ मेनी? सॉरी 3. हर्षा, 3 बॉन्ड बना रहा है। अरे एक कार्बन, पहला कार्बन तो 2 से ही कनेक्टेड ना सिर्फ, Yes, 1. 1 ना, ठीक है, 2 नहीं 1, ठीक है। अच्छा सॉरी, व्हाट अबाउट द सेकंड कार्बन, हाउ मेनी बॉन्ड इज इट मेकिंग? दैट इज मेकिंग सेकंड कार्बन 1. ना, 2 बॉन्ड्स ना, सेकंड इज कनेक्टेड टू 1 आल्सो एंड 2, नहीं दिख रहा क्या आप लोग को? कितने नाइलें निकल रही हैं वहां से, दिख रहा है कि नहीं? 2 है ना, दिखा सबको? हाँ 3। मार्टिन कहाँ देख रहे हो यार, तुम क्या ही करते रहते हो यार मेरे, इधर देख लो भाई, क्या कर रहे हो तुम? हाँ बताओ तो जरा, व्हाट आर यू डूइंग? You are bobbing your head like, can you show me what were you reading? How many bond is made by the third carbon? Tell me guys. Correct. Sadika, very good. Harsha, Mariam, Abdul Hamid, can you please show me with your hand, like how many bonds from the third carbon? Ji, Mariam. 1. Very good, right? So it is having 1. अच्छा, अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा that each terminal and terminal vertex represents carbon with appropriate number of hydrogen. With what? Tell me, repeat this word. With, अरे बोलो भाई, with Appropriate number of hydrogen. with appropriate, Siddiqa, Abdul Hamid, बोलो, with appropriate number of hydrogen. With appropriate number of hydrogen. With once again with Appropriate number of hydrogen. With appropriate number of hydrogen. With appropriate number of hydrogen. The meaning is carbon has to make how many bonds? 4 bonds, है ना? कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्लास 10 में तो पढ़ाई गई होगी ना, कार्बन मेक्स 4 bonds, कार्बन मेक्स 4 bonds. Now the first carbon is already making how many bonds? पहला कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है आपको? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई. Yes sir. एक बॉन्ड दिख रहा. What about the other 3 bonds? What about the other 3 bonds? Those bonds will be with hydrogen जो कि दिख नहीं रहा है. That is not shown. The number, that hydrogen. तो कैसे पता चलेगा that first carbon is having how many hydrogens? It is having 4 minus number of bonds करना. आपको क्या करना है? 4 minus number of bonds will give you the number of hydrogen. Number of hydrogen. जैसे कि पहला वाला कार्बन एटम. Please here guys. The first carbon atom. It is making how many bonds? कितने बॉन्ड दिख रहे हैं उसके पहले कार्बन के? 1. तो 4 minus 1 कितना हो गया? 3. तो उसमें कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? सिद्दीका बोल क्यों नहीं रहे आप? माइक ऑन करके बोलो यार, नहीं बोलो फिर फंसोगे इसमें. आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज. अगर आपकी क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही है एंड दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस स्ट्रक्चर, आई एम ओनली गोइंग टू डू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है? बिकॉज एक क्लास में 2 क्लास में आई विल गिव टाइम so that you understand. It saves a lot of time for me when I have to write the structure. So you have to understand the bonding structure. There is no way around in this particular class. When you know the bonding structure, you will excel in the class 12th math, organic chemistry also. ठीक है? So very important. ये सबसे starting point है. ध्यान दीजिए please all of you guys. बोले ना सिद्दीका, मरियम, can you please have your mic on? सिद्दीका, मरियम, Abdul Hamid, Martin, Harsha, keep your mic on. How many bonds is made by the first carbon atom? How many bonds can you see? 1. 1. So how many hydrogens will be there? 4 minus 4 minus 1. 3 hydrogens, right? So this is what इसको represent करने. देखिए आप CH3N. What about the second carbon? How many bonds is it there? How many bonds are there for the second carbon? 2. So how many hydrogens? 2. 2. Can you see? वैसे 3 Yes, का sir. केस समझ में आया? 3 का केस समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है. So if you have not written the pink ones, आप please write the pink lines. जो भी pink में लिखा है
and then raise your hand once you're done. If you have done writing, so raise your hand. And if you're not done, please write and then raise your hand. We will do some questions now. Abdul Hamid, everyone, please raise your hand if you're done already. Okay, I think everyone is done. You can lower your hands now and please write a question. ठीक है, ध्यान सुनिए. सवाल है आपके पास. Count the number of carbon atoms in following. ठीक है, आपके पास पहला स्ट्रक्चर है. अच्छा, एक सेकंड, पेस्ट दिस. Let me know if you need my help. कार्बन एटम काउंट करना है आपको, हाइड्रोजन नहीं काउंट करना अभी, ठीक है ना. पहले कार्बन एटम पे महारत हासिल करें. One, and then write the second one. फटाफट आंसर आना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं लगना चाहिए. This 2, this 3, और क्या है भाई. One, two, three, four, five, six. Quickly answer in the Zoom chat. If you are having difficulty, please let me know. Please let me know. तुक्का कोई नहीं मारेगा.
Mariam, first one is correct. Harsha, first is correct. Second is correct. Third one, yeah, very good. That is correct. Fourth is yeah, fourth is correct. Fifth is also correct. Sixth is also correct. I think. Let's see. Yeah, this is also correct. Very good. Guys, why you are taking so much time? Guys, why you are taking so much time? लिखने में टाइम लग जा रहा है आप लोगों को क्या? थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर लीजिए. Okay, then till here. Even if you are not going to make it, ना तब भी अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना फोटो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. So this is 7th, this is 8th, this is 9th, this is 10th. You have got some answers now. Siddhika is not getting how to do it. Okay, fine. Can we go back to the previous one, Siddhika? Each terminal and vertex represents carbon atom. ठीक है? With appropriate number of hydrogen को भूल जाइए जरा. So terminal जहां से start होती हैं चीजें and vertex wherever you have the corner. सही है? Correct, सिद्धिका? ठीक है. सबसे पहले तो corners तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ना. ये एक corner है. 1, 2, 3 corners you can easily see. टर्मिनल देख लीजिए. दिस इज वन टर्मिनल, दिस इज द अदर टर्मिनल. यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है. टर्मिनल इज समथिंग वेयर इट स्टार्ट्स और एंड्स, राइट? सही है ना? तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5. व्हाट अबाउट दिस वन? हाउ मेनी हियर? अच्छा, ये जो है ना, दिस इज डबल बॉन्ड. हाँ, करेक्ट. वेरी गुड सिद्दीका. यहाँ पे कितने हो जाएंगे थर्ड वाले में, बताइए. करेक्ट, वेरी गुड. बस आंसर करते जाइए अब आप आराम से. चलिए, I will give you 1 more minutes. Let's take 2 more minutes. ये करना चाहिए की जगह. Take 2 more minutes, then I will write the answers.
अच्छा ठीक है, मरियम मरियम is like I don't know. Okay, Mariam. Then you have that. Shadi. Just a few more seconds and then I will write all the answers. You are not going to see the ninth structure anywhere, है ना? So don't worry. चलिए, ठीक है. So if I look at this particular one, second case, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and obviously these are double bonds. So here we have 6 carbon atoms. If I look here, so this whole thing is having 6. Similarly, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So here we have 12. Here also 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 6, 6, and 6. All of these are having 6 carbon atoms. When I look here, we are having 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. This is a nitrogen, so we don't count this one, obviously. 3, 4, and 5. So here also you are having 5 carbon atoms. Now this is a ring which is having 5 edges. So this will be 5. Then here we are having the 6th one. If I look at the 9th one, you see here 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. I hope you can see very easily. 5th carbon is here, the 6th carbon is here, and the 7th carbon is here. So we have 7 carbons in this case. And then if I look at this particular case, then here you have 1 carbon, 2 carbon, here is the 3rd carbon, here is the 4th carbon, 5, 6, 7, and 8 carbons. So here we have 8 carbons. If you guys need explanation, any further explanation for any of these, please let me know. Otherwise, you can copy this down. अगर आपको समझ में आया तो please copy this down. It's very easy. Yes, Siddika, I think all of your answers were right after that, right? है ना? 10 में आपने सही किया, 9 आपका नहीं पता चला, 6, 5 या सही है, very good. Harsha, 7th is 5, 6, 7, 8 yeah, very good. But अच्छा मरियम का आंसर था, sorry Siddika, not yours. Siddika, बाकी सही हुआ था आपका? Yes, sir. I only got 8 wrong. अच्छा ठीक है, no problem. ठीक है. Okay, so this is regarding the carbon atoms. Similar thing we have to do for the hydrogens also. Okay, so write the next question, that is count the number of hydrogens in the following. For each carbon atom, obviously, right? Count the number of hydrogen. Write the question. Count the number of hydrogen for each carbon in following. Now let us see. देखिए एक हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसका हम बता देते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आप उसका बात कर सकते हैं, ठीक है? So here we have too many carbon atoms. ध्यान दीजिए, ठीक है? All of you guys, please see it. Let's talk about this particular carbon atom. यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना, इसने एक बॉन्ड बनाए हुए. Can you see that is only one bond? So if it is having one bond, therefore how many hydrogens will be present? Tell me. How many hydrogens if it is having one bond? 3. Got it, guys? Yes or no? है ना? क्या करना है आपने? 4 minus bonds. 4 minus bonds. अच्छा, tell me how many bonds can you see for this particular carbon atom? अभी जो हमने यहाँ पे सर्कल किया, इसमें कितने होंगे? How many bonds? Write in the chat, please, all of you guys. मार्टिन तो पता नहीं क्या ही कर रहे हो यार, तुम सुन भी नहीं रहे, सोना है या तुमको क्या करना है? Sir, what was the question? The question is how many bond is present for this particular carbon atom? Yes, Harsha correct. Harsha correct. मरियम नहीं ना, फिर से देखिए मरियम. अरे आप एक ही तरफ देखते हो, पूरा देखो ना, चारों तरफ देखो कितने बॉन्ड्स हैं, कितनी लाइनें निकल रही हैं वहां से, वो देखना है आपने. सिद्दीका थोड़ा और ध्यान से देखिए, आपको एक जगह डबल बॉन्ड भी तो दिख रहा होगा. आई होप यू गाइस आर सीइंग द डबल बॉन्ड. मरियम को 0 दिख रहा है. ओ माय गॉड मरियम. अब्दुल हमीद को 5 दिख रहा है. अरे भाई साहब, काउंट कर लें, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना? काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना गाइस? चलिए देखिए इधर ध्यान से देखिए. पहला बॉन्ड तो आपके पास ये निकल रहा है ब्लू से, जो उसको हमने नोट कर दिया, हाँ ना, सही है. दूसरे भाई हाँ ना कुछ तो बोलो यार. अगला बॉन्ड ये रेड वाला हो गया, सही है? कोई दिक्कत? नो सर.
नहीं ना। अब तीसरा हो गया आपके पास ये ग्रीन वाला, सही है, Yes, sir. करेक्ट गाइस। और एक बिल्कुल रंग बिरंगा सा आएगा, ये फोर्थ बॉन्ड हो गया आपके पास, नहीं हुआ 4 बॉन्ड। कैन ऑल ऑफ यू गाइस सी द 4 बॉन्ड्स? यस और नो, प्लीज टेल Yes, मी। sir. Now if it is having 4 bonds, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 4 minus 1, 3. 4 माइनस 1, अभी भी 1। अरे भाई 4 माइनस बॉन्ड्स करना है ना, तो 4 कितने बॉन्ड्स है? 4 माइनस क्या करेंगे? हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 bonds. तो कितने हो गए? 0, 0. वेरी गुड। मरियम, आप हाइड्रोजन के लिए आंसर कर रहे थे क्या? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो आपका आंसर सही है। पहले आपने 0 दिया था, उसके बाद फिर आपने, ठीक है, 4 बॉन्ड्स, देयरफॉर हाउ मेनी हाइड्रोजन? 0 हाइड्रोजन्स। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ओह माय गॉड, माय बैड, आई एम रिमूविंग दीज, और ये रंग बिरंगी चीजें आ जाती है इस पर्टिकुलर कार्बन एटम पे। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स विल बी देयर? राइट इन द चैट ऑल ऑफ यू गाइस, इसमें कितने हाइड्रोजन्स हो जाएंगे? यू हैव टू डू 4 माइनस बॉन्ड्स, ये लिख लो यार आप लोग कहीं पे, ठीक है ना, और करो। अगर आपको देख के आंसर नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? वेरी गुड सिद्दीका, चलिए सिद्दीका की नजर तेज है। अच्छा, चश्मा लगाया हुआ, क्या नजर तेज होगी? मरियम आप बताएं। ठीक है, करेक्ट है मरियम। हर्षा करेक्ट है, वेरी गुड। अब्दुल हमीद एंड मार्टिन, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। नहीं आया? अब्दुल हमीद एंड मार्टिन, आंसर आना चाहिए। मार्टिन का गलत आंसर है। अब्दुल हमीद वेटिंग फॉर यू। अब्दुल हमीद, मार्टिन आंसर इज रॉन्ग, प्लीज सी व्हाई इट इज रॉन्ग। काउंट, अरे भाई काउंट द नंबर, ऐसे गिनो ना, आपका हाथ तो स्क्रीन पे आना चाहिए। काउंट करो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब्दुल हमीद, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 7, अरे भाई साहब 7 हाइड्रोजन होंगे। ओ माय गॉड, माइक ऑन करो अब्दुल हमीद, माइक ऑन करो। Yes, sir. हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन यू सी? कितनी लकीरें निकल रही हैं उस पॉइंट से, ये बता दो आप बस। Sir, 1. एक निकल रहा है बस वहां से। अरे क्या सवाल क्या पूछ रहे हैं, जवाब क्या देते हैं यार आप लोग? हम सवाल क्या पूछ रहे हैं बताइए? आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स ना, आई एम टॉकिंग अबाउट। Yes, sir. तो आप बॉन्ड्स के बारे में जवाब दिया है, किसी और चीज के बारे में जवाब दिया आपने? 1 जो बोल दिया आपने फट से। अरे यार बोलो तो, कुछ तो बोलो। ऐसा हम डांट रहे क्या? लगा ऐसा लग रहा है क्या? हम डांट नहीं रहे, तो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। हाँ जी बताएं अब्दुल हमीद। 1 जो आपने आंसर किया, वो किस चीज के लिए किया? अरे यार, अरे 1 आप माइक ऑन रखो यार, माइक ऑन रखो अब्दुल हमीद। 1 आपने आंसर किया, 1 बोला आपने, Yes, sir. वो गलती से निकल गया क्या मुंह से 1? No, sir. हाँ, No, sir. यस सर, क्या पक्की बात, गलती से निकला? Yes, sir. ठीक है, कोई बात, तो बोल दो ना, नहीं सर गलती से 1 निकल गया। आप ऐसा हमको जोर जोर से बोले, हम डर गए, डर से मेरे 1 निकल गया ऐसे, ठीक है, तो ये बोल दो कि सर आपसे हम डर गए। चलिए अब हम आपको डराएंगे नहीं, ध्यान से बताइए। लकीरें जानते हैं? लकीरें, लाइंस, लाइंस पता है Yes, आपको? sir. हाँ तो बताइए जरा, कितने लाइंस निकल रहे हैं यहाँ से? लाइक द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, लकीरों का मतलब बॉन्ड्स होता है, ये मान लो। अब बताओ इस कार्बन एटम से कितने आपको दिख रही है, बताइए। हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन यू सी दिस कार्बन एटम इज फॉर्मिंग? राइट साइड, अच्छा फाइन, चलो ठीक, ठीक है, ऐसे कर ले। कार्बन है ना, ये कार्बन है, राइट साइड में कितना बना रहा है बताओ जरा, राइट साइड में। Right side में double bond है. हाँ, डबल बॉन्ड बना रहा है, और लेफ्ट साइड में Single bond. तो कितना बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन? 3. हाँ, हाँ चलो भाई, थैंक यू वेरी मच अब्दुल हमीद। आपको, आपने हमें एक चीज सिखाई कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर कैसे समझाना है इसके बारे में ना। आई डिड नॉट ट्राई दिस वन विद एवरी एनीवन। चलिए ठीक है, आपने आंसर किया ना, 3 बॉन्ड्स आपने आंसर किया, सही है। Yes, sir. अब थोड़ा गड़बड़ी ना करते हुए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता दो कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। कितने बॉन्ड्स है उतना यहाँ पे प्लग इन करो, 4 माइनस जितने भी बॉन्ड है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता दो भाई। 4 कुछ गलती minus मत करना। 3 bonds, 1. 1 हाइड्रोजन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अगले पे चलते हैं जरा। व्हाट अबाउट दिस कार्बन एटम, बताएं।
वैसे ही कर लो आप लोग, कार्बन ऊपर नीचे दाएं बाएं कितना बॉन्ड बना रहा है और 4 - बॉन्ड कर लेना बस आपने। ठीक है, लिख लीजिए अगर इफ इट हेल्प्स ना, देन राइट द कार्बन एटम। मरियम नहीं, गलत आंसर। हाँ, सिद्दीका का सही है, वेरी गुड सिद्दीका। वेटिंग फॉर अदर्स। मार्टिन फिर से गलत। बनाओ भाई मार्टिन, ऐसे नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं ऐसे। इफ यू आर नॉट मेकिंग, हाँ इफ यू आर नो मार्टिन फिर से तुक्का मार रहे हैं आप तो, आप गलत, फिर गलत। ठीक है, तो Middle bond. बचपन में, एक सेकंड आप लोग प्लीज आंसर करें चैट में, कोई बोलेगा नहीं। चैट में आंसर करें प्लीज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आंसर प्लीज आंसर इन द चैट। अब्दुल हमीद भाई करो आंसर, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, इतना समझाया आपको हमने। अच्छा चलिए पांच, चलो एक बार तो कम से कम आंसर आ जाए सही सही सबका। उसके बाद सिद्दीका, मरियम, हर्षा, आई थिंक आप लोग सही रास्ते पे जा रही हैं, सिराते मुस्तकीम पे बिल्कुल। तो आप लोग क्या करें, आप लोग इस स्ट्रक्चर को बनाएं, एंड द वे आई एम राइटिंग ना, 4 बॉन्ड दैट देयरफॉर 0 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड देयरफॉर 1 हाइड्रोजन, है ना। इस तरह से प्लीज आप पूरे स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन है उसके लिए करके दिखा दें। ठीक है, हर्षा, सिद्दीका, मरियम, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब्दुल हमीद क्या कर रहे हो यार आप? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन बता दो अब। वेरी गुड अब्दुल हमीद, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता दो। वेरी गुड मार्टिन, आपको समझना है आप फिर से? Yes. हाँ जी, चलिए ठीक है, इस कार्बन को ले लेते हैं। नॉट टेल मी, राइट में कितने बॉन्ड्स बना रहा है ये, कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौबल, पांचबल? राइट में, अरे हाँ, अरे भाई आप माइक ऑन करोगे तब तो आवाज आएगी। मार्टिन, Yes, sir. हाउ मेनी बॉन्ड इट इज मेकिंग इन द राइट साइड? राइट साइड में कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बना रहा है, डबल बना रहा है, क्या बॉन्ड बना रहा है? Double. राइट और लेफ्ट नहीं पता क्या यार आपको? इसके Oh, it's बारे में हम right. बात कर रहे हैं। Single. Right is single. हाँ, राइट में सिंगल बॉन्ड बना रहा है और लेफ्ट में Left is double. डबल। और कहीं और बॉन्ड बना रहा है क्या, ऊपर नीचे कहीं? No. नहीं, नहीं बना रहा नीचे। अरे यार क्या है, तुम देख नहीं रहे अब तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं बताओ। So, ये आपको and बॉन्ड नहीं there's दिख रहा है? हाँ तो फिर yeah. वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, इसको हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाउ मेनी बॉन्ड इट इज मेकिंग, टेल मी। So 4. प्लग इन करें फॉर्मूला में और बताएं हाउ मेनी हाइड्रोजन। 0. 0. वेरी गुड, चलिए आप भी, आपके पास काम आ गया। यू मेक दिस होल स्ट्रक्चर एंड द वे आई एम ड्राइंग यू विल डू इट फॉर ऑल दी कार्बन एटम्स, लाइक 4 बॉन्ड्स देयरफॉर 0 हाइड्रोजन, ऐसे करते करते लिखिएगा। You can write directly the number of hydrogens also, no problem in that. Keep me. ठीक है, 4 bonds hydrogen, ठीक है। 2 bonds 2 hydrogen, तो 4 bonds 2 hydrogen, very good, this is very good हर्षा, सही है। Very good हर्षा, it's correct. Waiting for others, मरियम, सिद्दीका।
So what? Very good. 0. Yeah, correct. 0, 2, 0. देखिए कहीं कहीं ना आपने उल्टा लिख दिया है, जरा देखिए। Especially I saw this, यहाँ पे देखिए। गॉट इट ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम उसको उल्टा कर देना, ऐसे कर दे 3 हाइड्रोजन देयरफॉर 1 बॉन्ड, ऐसे हम पढ़ लें। Yes, और sir. उसके बाद आपने उल्टा ही कर दिया, पूरे में उल्टा कर दिया आपने। Yes, पूरे में sir. उल्टा I कर दिया क्या? took the line. नहीं 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 नहीं, बस वहीं पे उल्टा किया आपने, बाकी जगह तो ठीक है आई थिंक। 3 बॉन्ड देयरफॉर 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, हाँ बस उसी जगह पे आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, अदरवाइज इट्स फाइन। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट बट राइट मरियम। मरियम तो भाई फांकी मारती है, बॉन्ड वॉन्ड काउंटिंग क्या, सीधा हाइड्रोजन। क्या मरियम है ना? 0 0 ठीक है, 2 ठीक है, 0 ठीक है, 3 ठीक है, 3 ठीक है, 1 ठीक है, 0 ठीक है, 1 ठीक है, 1 ठीक है, वेरी गुड। अब्दुल हमीद और मार्टिन, आपका है इंतजार, भेजिए वॉट एवर यू हैव डन क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं। I will give you only 2 more minutes. Do whatever you can in those 2 minutes, and then we will see. Guys, 1 more minute. Send me whatever you have done. Sir, Hmm. for the बताएं। ones I got wrong, wouldn't it be 2 bonds? How would it आपने be? 2 bonds कहाँ पे? The ones that I did wrong. It will be 1 bond, right? 1 bond, 3 hydrogen. हाँ करेक्ट, Okay. 1 बॉन्ड। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, हमने उल्टा थोड़ा सा हमने ना गलत देखे, माय बैड थिंग्स। सिद्दीका सर, माय बैड। आपका सही है, वो आपके एरो की वजह से ना थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया। Yes, sir. ठीक है, वो इस वजह से ना, सॉरी सॉरी, मतलब ये दिख रहा है आपको, ये 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन। Yes, sir. आई थॉट दिस वाज फॉर, ये इसके लिए था, आपने यहाँ पे ठीक है 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, करेक्ट। I didn't have space to write it. Sorry. That's fine, not a problem. चलिए, Abdul Hamid and Martin, please send me whatever you have done. अच्छा, Martin has Yes, sent. sir. Thank you, Martin. अरे भाई साहब, मार्टिन तो गलत है यार, मार्टिन बहुत गलत है आपका तो, आपने बॉन्ड्स काउंट ही नहीं किए, कहाँ से सही होगा? गलत है, मेजॉरिटी ऑफ देम इज रॉन्ग। अब्दुल हमीद जल्दी भेज, काउंट दी बॉन्ड्स यार, आपको ये करना पड़ रहा था जब आई हैव टू शो यू टू शो यू ना, आपको ये भी नहीं दिख रहा था कि आपके पास यहाँ नीचे एक बॉन्ड है, तो आपका डायरेक्ट सही कैसे हो सकता है? आपने जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिया सर, यू हैव टू डू द वर्क अंटिल यू डू द वर्क, आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब्दुल हमीद प्लीज सेंड मी क्विकली व्हाटएवर यू हैव डन। Sir, can I bring the mobile? I don't have it right now. अच्छा, just show me, don't worry, just show me on the screen, just give me a second.
Show me. You have to turn off that blur thing in your camera. It's blurring the whole thing. You have to bring it a bit close. I can't see anything. Sorry. You have to somewhat it is correct. Yeah. Fine. चलिए एक बार आपको चेक कर लीजिए जरा. Those who have not done. See here, guys. I'm writing the bonds as well as the hydrogens. So here you can see there are 4 bonds. Therefore, there will be 0 hydrogen. Here you can see there are 1 bond, 2 bonds. Therefore, 2 bonds and 2 hydrogens. If you look at here you can see that it is having 1, 2, 3, 4 bonds. If it is having 4 bonds, therefore it will be having 4 bonds, 0 hydrogen. Here you can see it is having 1 bond. And here also you can see it is having 1 bond, both of them. So 1 bond and there will be 3 hydrogens. Here it is having 1 bond. So there will be 3 hydrogens. Here it is having 3 bonds. So it will be having 1 hydrogen. Here it is having 4 bonds. So there will be only 0 hydrogens. Here it is having 3 bonds. So 1 hydrogen. Here it is having 3 bonds. So there will be 1 hydrogen atom. Okay. So you have to do this at home. आपने अगर अभी नहीं किया, there is a few homework that I'm going to give you guys. You will just take a screenshot and then you are going to count all the hydrogen atoms for these. ठीक है? चलिए. Take a screenshot. The same question. Count the number of hydrogens on each carbon atom. Took the screenshot. All of you. Okay. So that's it for today. Anna, we are going to start a few new things in the next class. आज के लिए इतना ही, but please do the homework. This is the base that we are building. Okay. If you are not comfortable with the bond line structures, you will be struggling in the organic chemistry from now on. So you have good 5 days. In those 5 days, you have to master the bond line structure. Apart from this, you will also get some homework from the Learnivio team. उस homework को भी आपको करना है ना? And then please start very quickly in organic chemistry, ठीक है ना? And you have to do a few problems. वो हम आपको बता देते हैं. 12.4, 5 and 6. Sir, हाँ जी बताएं. what are the numbers on 1.13, 1.13? That is question number. This is from a book that I used to have in my. Yes, sir, but what are the numbers on the drawing? The 1, 0. 1, 2. अरे नहीं ये हाइड्रोजन है, मतलब उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे आपको बस लिख देना है ना. यू सी 0 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से आपको लिख देना बस. This is actually from a book that I did not use in 11th, but rather I used in my BSc and then when I started teaching. It's a really good book, but आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर आपके में कभी नहीं आने वाला, बट यू हैव, अगर आपने देख लिया तो कोई ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर भी नहीं है. यू कैन सी दैट इट इज हैविंग 1 2 3 4 इतने कार्बन एटम्स है, दैट्स इट, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आल्सो. सो ये सारी चीजें बस देखने के लिए, बट इट्स अ वेरी गुड बुक दैट हर एक छोटे कंसेप्ट के बाद ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो उससे क्या होता है ना कि यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड ग्रास्प ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक very quickly. Also, one more thing you have to do is problem number, this is from your NCERT textbook, problem 12.4. This is from the old book, okay? Organic chemistry का जो भी आपका chapter number है, I don't know what chapter number is that if you are having a new book, 12. That is whatever the chapter number, 12 or 11.4, 12.5 and 12.6. These are examples, okay? Examples. In text, you will see. In my textbook, which is the old version, it is on the page number 337.
तो these are examples. आप लोग आराम से इसको समझने की जरा कोशिश कीजिएगा अगर खुद से ना हो चीजें. You're trying to understand what is there. Yes, What's given. problem 12.4, right? 12.4, yeah, correct. Yes, sir, it's there. Sorry? It is there on page 237. Sorry, 337. Yeah. This is my old book. अगर आपके पास new book है तो उसमें कुछ और page number होगा, but I'm telling about the old It's new the book. same page number.